Hello everyone. This question appears in class 7th NCERT chapter of practical geometry. This is second question of its exercise 10.4. So the question says that construct triangle PQR if PQ is equal to 5 centimeter, angle PQR is equal to 105 degree and angle QRP is equal to 40 degree. So हम एक line segment ड्रॉ कर लेंगे with the help of a scale PQ of 5 centimeter. देन हमें एंगल P पता नहीं है एंड एंगल Q एंड R पता है. सो हम एंगल P फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, एंगल सम थ्योरम, एंड द थ्योरम इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to 180 degree. So angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. एंड एंगल P हमें फाइंड आउट करना है, एंगल Q हमें गिवन है 105 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 145. सो एंगल P इज इक्वल टू 35 डिग्री. सो एंगल Q हमें गिवन है 105 डिग्री. सो हम इसे एंगल पॉइंट Q पर 105 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 105 डिग्री. देन एंगल P इज इक्वल टू 35 डिग्री. सो पॉइंट P पर 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. और जहां पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ये पॉइंट आ जाएगा हमारा पॉइंट R. सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR. हियर angle Q is equal to 105 degree, angle P is equal to 35 degree and angle R is equal to 40 degree and PQ is equal to 5 centimeter. Thank you.